श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं चतुर्थः स्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को माया की प्रबलता समझाना। राजोवाच विस्मितोऽस्मि महाभाग श्रुत्वाख्यानं महामते। संसारोऽयं पापरूपा कथं मुच्येत बन्धनात्। कश्यपस्यापि दायादस्त्रिलोकी विभवे सति। कृत्वा नीदृशं कर्म को न कुर्याज्जुगुप्सितं। गर्भे प्रविश्य बालस्य हननं दारुणं किल। सेवामिषेण मातुश्च कृत्वा सपथमद्भुतं। शास्ता धर्मस्य गुप्ता च त्रिलोक्यापतिरप्युत। कृत्वा नीदृशं कर्म को नु कुर्याद साम्प्रतं। पितामहा मे संग्रामे कुरुक्षेत्रेति दारुणम्। कृतवन्तस्तथाश्चर्यं दुष्टं कर्म जगद्गुरो। भीष्मो द्रोणाकृपाकर्णो धर्मांसोऽपि युधिष्ठिरः। सर्वे विरुद्धधर्मेण वासुदेवेन नोदिता। असारतां विजानन्ता संसारस्य सुमेधसः। देवाश्चाच कथं चक्रुर्निन्दितं धर्मतत्परा। कास्था धर्मस्य विप्रेन्द्र प्रमाणं किं विनिश्चितं। चलिचित्तोऽस्मि सञ्जाता श्रुत्वा चैतत्कथानकम्। आप्तवाक्यं प्रमाणं चेदाप्ता परदेहवान्। पुरुषो विषयासक्तो रागी भवति सर्वथा। रागो द्वेषो भवेन्नूनम् अर्थनाशाद् असंशयम्। द्वेषादसत्यवचनं वक्तव्यं स्वार्थसिद्धये। जरासन्धविघातार्थं हरिणा सत्त्वमूर्तिना। छलेन रचितं रूपं ब्राह्मणस्य विजानता। तदाप्ता का प्रमाणं किं सत्त्वमूर्तिरपि दृशः। अर्जुनोऽपि तथैवात्र कार्ये यज्ञविनिर्मिते। कीदृशोऽयं कृतो यज्ञः किमर्थं समुवर्जितः। परलोकपदार्थं वा यशसे वान्यथा किल। धर्मस्य प्रथमापादा सत्यमेतच्छ्रुतिर्वचः। द्वितीयस्तो तथा शौचं दयापादस्तृतीयकः। दानं पादश्चतुर्थश्च पुराणज्ञा वदन्ति वै। तैर्विहीना कथं धर्मस्तिष्ठेदेषु सम्मतः। धर्महीनं कृतं कर्म कथं तत्फलदं भवेत्। धर्मे स्थिरा मतिः क्वापि न कस्यापि प्रतीयते। छलार्थञ्च यदा विष्णुर्वामनो भूज्जगत्प्रभो। येन वामनरूपेण वञ्चितोऽसौ बलिर्नृपः। विहर्ता शतयज्ञस्य वेदाज्ञा परिपालकः। धर्मिष्ठो दानशीलश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः। स्थानात् प्रवंसितो कस्माद् विष्णुना प्रविष्णुना। जितं केन तयो कार्य कृष्णबलिना वामनेन वा। छलकर्म विधाचायं सन्देहोऽत्र महान् मम। वञ्चयित्वा वञ्चितेन सत्यं वद द्विजोत्तम। पुराणकर्ता त्वमसि धर्मज्ञश्च महामतिः। व्यास उवाच जितं वै बलिना राजन् दत्तायेन च मेदिनी। त्रिविक्रमोऽपि नाम्नाय प्रथितो वामनोऽभवत्। छलनार्थमिदं राजन् वामनत्वं नराधिप। सम्प्राप्तं हरिणा भूयो द्वारपालत्वमेव च। सत्यादन्यतरन्नास्ति मूलं धर्मस्य पार्थिव। दोषाद्यं देहिनां राजन् सत्यं सर्वात्मना किल। माया बलवती भूप त्रिगुणा बहुरूपिणी। येदं निर्मितं विश्वं गुणैः सबलितं त्रिभुः। तस्मात् छलवता सत्यं कुतो विद्धं भवेन्नृप। मिश्रेण जनिता चैव स्थितिरेषा सनातनी। वैखानसाश्च मुनयो निसङ्गा निष्प्रतिग्रहा। सत्ययुक्ता भवन्त्यत्र वीतरागागतस्पृहा। दृष्टान्तदर्शनार्थाय निर्मितास्ते च तादृशा। अन्यत् सर्वं सबलितं गुणैरेभिस्त्रिभिर्नृप। नैकं वाक्यं पुराणेषु वेदेषु नृपसत्तम। धर्मशास्त्रेषु चाङ्गेषु सगुणैरचितेष्विह। सगुणा सगुणं कुर्यान्निर्गुणो न करोति वै। गुणास्ते मिश्रिता सर्वे न पृथग्भावसङ्गता। निर्विलीके स्थिरे धर्मे मति कस्यापि न स्थिरा। भवोद्भवे महाराज मायया मोहितस्य वै। इन्द्रियाणि प्रमाथेने तदासक्तं मनस्तथा। करोति विविधान् भावान् गुणैस्तैः प्रेरितो भृशं। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्ता प्राणिनः स्थिरजङ्गमा। सर्वे मायावशा राजन् सानुक्रीडति तैरिह। सर्वान् वै मोहयत्येषा विकुर्वत्यनिशं जगत्।
असत्यो जायते राजन् कार्यवान् प्रथमं नरः इन्द्रियार्थाश्चिन्तयानो न प्राप्नोति यदा नरः तदर्थं छलमादत्ते छलात् पापे प्रवर्तते कामा क्रोधश्च लोभश्च वैरिणो बलवत्तरा कृता कृतं न जानन्ति प्राणिनस्तद्वशं गता विभवे सत्यहंकारा प्रबला प्रभवत्यपि अहंकाराद्भवेन्मोहो मोहान्मरणमेव च संकल्पा बहवस्तत्र विकल्पा प्रभवन्ति च ईर्ष्यासूया तथा द्वेषा प्रादुर्भवति चेतसि आशा तृष्णा तथा दैन्यं दम्भो धर्ममतिस्तथा प्राणिनां प्रभवन्ते ते भावा मोहसमुद्भवा यज्ञदानानि तीर्थानि व्रतानि नियमास्तथा अहंकाराभिभूतस्तु करोति पुरुषोन्वहम् अहं भावकृतं सर्वं प्रभवेद्वै न शौचवत् रागलोभात् कृतं कर्म सर्वांगं शुद्धिवर्जितं प्रथमं द्रव्यशुद्धिश्च द्रष्टव्या विबुधैः किल अद्रोहेणार्जितं द्रव्यं प्रशस्तं धर्मकर्मणि द्रोहार्जितेन द्रव्येण यत्करोति शुभं नरः विपरीतं भवेत् तत्तु फलकाले नृपोत्तम मनोति निर्मलं यस्य स सम्यक् फलभाग् भवेत् तस्मिन् विकारयुक्ते तु न यथार्थफलं लभेत् कर्तारः कर्मणां सर्वे आचार्य ऋत्विजादयः शुस्ते विशुद्धमनसस्तदा पूर्णं भवेत् फलं देशकालक्रियाद्रव्यकर्तॄणां शुद्धता यदि मंत्राणां च तदा पूर्णं कर्मणां फलमश्नुते शत्रूणां नाशमुद्दिश्य सवृद्धिं परमां तथा करोति सुकृतं तद्वद्विपरीतं भवेत् किल स्वार्थासक्ता पुमान् नित्यं न जानाति शुभाशुभं दैवाधीना सदा कुर्यात् पापमेव न सत्कृतं प्राजापत्यासुरा सर्वे ह्यसुराश्च तदुद्भवा सर्वे ते स्वार्थनिरताः परस्परविरोधिनः सत्तोद्भवासुरा सर्वे प्युक्ता वेदेषु मानुषा रजोद्भवास्तामसास्तु तिर्यञ्च परिकीर्तिता सत्तोद्भवानां तैर्वैरं परस्परमनारतं तिरश्चामत्र किं चित्रं जातिवैरसमुद्भवे सदा द्रोहपराधे वा तपोविघ्नकरास्तथा असन्तुष्टा द्वेषपरा परस्परविरोधिनः अहंकार समुद्भूता संसारोऽयं यतो नृप रागद्वेषविहीनस्तु स कथं जायते नृप। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे अधम जगता स्थिति वर्णनाम चतुर्थः। अथ पंचमः व्यास नर नारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उससे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव बसंत और अप्सराओं को भेजना। व्यास उवाच अथ किं बहुनोक्तेन संसारेऽस्मिन् नृपोत्तम धर्मात्माद्रोह बुद्धिस्तु कश्चिद्भवति कर्हिचित् रागद्वेषावृतं विश्वं सर्वं स्थावरजङ्गमम् आद्य युगेऽपि राजेन्द्र किमद्य कलिदूषिते देवासेर्याश्च सद्रोहाश्छलकर्म रता सदा मानुषाणां तिरश्चां च का वार्ता नृपगण्यते द्रोहपरे द्रोहपरो भवेदिति समानता अद्रोहिणी तथा शान्ते विद्वेषा खलता स्मृता। यः कश्चित्तापसा शान्तो जपध्यानपरायणः भवेत्तस्य जपे विघ्नकर्ता वै मघवा परं सतां सत्ययुगं साक्षात् सर्वदैवा सतां किल कलिः मध्यमो मध्यमानां तो क्रियायोगौ युगे स्मृतौ कश्चित् कदाचित् भवति सत्यधर्मानुवर्तकः अन्यथान्ययुगानां वै सर्वे धर्मपरायणा वासनाकारणं राजन् सर्वत्र धर्मसंस्थितौ तस्यां वै मलिनायां तो धर्मोऽपि मलिनो भवेत् मलिना वासना सत्यं विनाशायेति सर्वथा ब्रह्मणो हृदयाज्जाता पुत्रो धर्म इति स्मृतः ब्राह्मणा सत्यसम्पन्नो वेदधर्मरता सदा दक्षस्य दुहितारो हि वृतादश महात्मना विवाह विधिना सम्यक् मुनिना गृहधर्मिणा तासुजीजनयत्पुत्रान् धर्मा सत्यवतां वरः हरिं कृष्णं नरं चैव तथा नारायणं नृप योगाभ्यासरतो नित्यं हरे कृष्णो बभूवः नरनारायणौ चैव चेरतुस्तप उत्तमम् प्रालेयाद्रिं समागत्य तीर्थे बदरिकाश्रमे तपस्य सुधुरीणौ तौ पुराणौ मुनिसत्तमौ गृह्णन्तौ तत्परं ब्रह्म गंगाया विपुले तटे
हरेरंसौ स्थितौ तत्र नरनारायणाभ्रसि पूर्णं वर्षसहस्रं तु चक्राते तप उत्तमं तापितं च जगत्सर्वं तपसा सचराचरं नरनारायणाभ्यां च चक्राक्षोभं तदा ययौ चिन्ताविष्टा सहस्राक्षो मनसा समुकल्पयत् किं कर्तव्यं धर्मपुत्रौ तापसौ ध्यानसंयुतौ सिद्धार्थौ सुवृतं श्रेष्ठमासनं मे ग्रहीष्यतः विघ्ना कथं प्रकर्तव्यस्तपो येन भवेन्न हि उत्पाद्य कामं क्रोधं च लोभं वा प्रतिदारुणम् इत्युद्देश्य सहस्राक्षा समारुह्य गजोत्तमं विघ्नकामस्तु तरसा जगाम गन्धमादनं गत्वा तत्राश्रमे पुण्ये तावपस्य क्षतक्रतुः तपसा दीप्तदेहौ तो भास्कराविचोदितौ ब्रह्म विष्णु किमेतौ वै प्रकटौ वा विभावसु धर्मपुत्रावृषि एतौ तपसा किं करिष्यतः इति संचिन्त्यतौ दृष्ट्वा तदोवाच सचीपतिः किं वा कार्यं महाभागौ ब्रूतं धर्मसुतौ किल ददामि वां वरं श्रेष्ठं दातुं यातोऽस्म्यहं ऋषि अधेयमपि दास्यामि तुष्टोऽस्मि तपसा किल व्यास उवाच एवं पुनः पुनः शक्रस्तावुवाच पुरः स्थितः नो चतुस्तावृषि ध्यान संस्थितौ दृढचेतसौ ततो वै मोहिनीं मायां चकार भयदां वृषः वृकान् सिंहाश्च व्याघ्राश्च समुत्पाद्य विभीषयत् वर्षं वातं तथा वन्यं समुत्पाद्य पुनः पुनः भीषयामास तौ शक्रो मायां कृत्वा विमोहिनीं भयतोऽपि वशं नीतौ नतौ धर्मसुतौ मुनि नरनारायणौ दृष्ट्वा चक्राच भवनं गतः वरदाने प्रलुब्धौ न भीतौ वह्निवायुतः व्याघ्रसिंहादिभिक्रान्तौ चलितौ नाश्रमात् स्वकात् न तयोर्ध्यानभङ्गं वै कर्तुं कोऽपि क्षमोऽभवत् इन्द्रोऽपि सदनं गत्वा चिन्तयामास दुःखितः चलितौ भयलोकाभ्यां नेमौ मुनिवरोत्तमौ चिन्तयन्तौ महाविद्यामादिशक्तिं सनातनीं ईश्वरीं सर्वलोकानां परां प्रकृतिमद्भुतां ध्यायतां काचमो लोके बहुमायाविदप्युत यन्मूला सकला माया देवासुरकृता किल ते कथं बाधितुं शक्ता ध्यायन्ति गतकल्मषा वाग्बीजं कामबीजं च मायाबीजं तथैव च चित्ते यस्य भवेत् तं तु बाधितुं कोऽपि न क्षमः माया मोहिता शक्रो भूयस्तस्य प्रतिक्रियां कर्तुं काम वसन्तौ तो समाहूयाब्रवीद्वचः मनोभौ वसन्तेन रत्यायुक्तो व्रजाधुना अप्सरो विषमायुक्तस्तरसा गन्धमादनं नरनारायणौ तत्र पुराणावृषि सत्तमौ कुरुतस्तप एकान्ते स्थितौ बदरिकाश्रमे गत्वा तत्र समीपे तु तयोर्मन्मथर्मार्गणै चित्तं कामातुरं कार्यं कुरु कार्यं ममाधुना मोहयित्वोच्चाटयित्वा विशिखैस्ताडयासु च वशीकुरु महाभागा मुनिधर्मसुतावपि को ह्यस्मिन् सर्वसंसारे देवो दैत्योऽथ मानवः यस्ते बाणवशं प्राप्तो न याति भ्रष्टाढितः ब्रह्माहं गिरिजानाथश्चन्द्रो वह्निर्विमोहितः गणनाकानयो कामं तद्बाणानां पराक्रमे वाराङ्गनागणोऽयं ते सहायार्थं मयेरितः आगमिष्यत् तत्रैव रम्भादीनां मनोरमा एका तिलोत्तमा रम्भा कार्यं साधयितुं क्षमा त्वमेवैकाक्षमं कामं मिलितैकस्तु संशयः कुरु कार्यं महाभाग ददामि तौ वाञ्छितं प्रलोभितौ मयात्यर्थं वरदानस्तपस्विनौ स्थानान्न चलितौ शान्तौ यथा वृथायं मे गताश्रमः तथा वै मायया कृत्वा भासितौ तापसौ भृशं तथापि नोत्थितौ स्थानात् देहरक्षापरौ नतौ व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा शक्रं प्राह मनोभवः वासवाद्य करिष्यामि कार्यं ते मनसेप्सितं यदि विष्णुं महेशं वा ब्रह्माणं वा दिवाकरं ध्यायन्तौ तौ तदास्माकं भवितारौ वसौ मुनि देवी भक्तं वशीकर्तुं नाहं शक्ता कथञ्चन कामराजं महाबीजं चिन्तयन्तं मनश्चलं तां देवीं चेन्महाशक्तिं संश्रितौ भक्तिभावतः न तदा मम बाणानां गोचरौ तापसौ किल इंद्र उवाच गच्छत्वं च महाभागः सर्वैस्तत्र समुद्यते कार्यं ममातिदुसाध्यं कर्ता हितमनुत्तमं व्यास उवाच इति तेन समादिष्टा ये सर्वे समुद्यता यत्र तौ धर्मपुत्रौ द्वौ ते पाते दुष्करं तपः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे नरनारायण कथा वर्णनम नाम पंचमोध्यायात षष्ठः। कामदेव द्वारा नरनारायण के समीप वसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति,
अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। व्यास उवाच प्रथमं तत्र संप्राप्तो वसंता पर्वतोत्तमे पुष्पितापादपा सर्वे दुरे फाले विराजिता आम्राश्च बकुला रम्यास्तिलका किंसुका शुभा सालास्तालास्तमालाश्च मधुका पुष्पिता बभूवु कोकिलालापा वृक्षाग्रे सुमनोहरा वल्योऽपि पुष्पिता सर्वा आलिलिङ्गुर्नगोत्तमान् प्राणिना स्वासु भार्यासु प्रेमयुक्ता स्मरातुरा बभूवुश्चाति मत्ताश्च क्रीडासक्ता परस्परं ववुर्मन्दा सुगन्धाश्च सुस्पर्शा दक्षिणानिला इन्द्रियाणि प्रमाथेने मुनीनामपि चाभवन् रीतयुक्तस्तथा कामं पूरयन् पञ्चमार्गणान् चकार त्वरितस्तत्र वासं बदरिकाश्रमे रम्भातिलोत्तमाद्याश्च गत्वा तत्र वराश्रमे गानं चक्रुषु गीतज्ञा स्वरतान् समन्वितं तच्छ्रुत्वा मधुरोद्गीतं कोकिलानां च कूजितं भ्रमरालिबिरा वञ्च प्रबुद्धौ तौ मुनीश्वरौ ऋतुराजमकाले तु दृष्ट्वा तौ पुष्पितं वनं जातौ चिन्तापरौ तत्र नरनारायणाभ्रसे किमद्य शिशिरापाया संवृता समयं विना प्राणिनो विह्वला सर्वे लक्षन्ते स्मरातुराः कालधर्म विपर्यासा कथमद्य दुरा सदा नरं नारायण प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः नारायण उवाच पश्य भ्रातरिमे वृक्षा पुष्पिता प्रतिभान्ति वै कोकिलालापसङ्घुष्टा भ्रमरालिविराजिता शिशिरं भीममातङ्गं धारयन् स्वखरैर्नखै वसन्तकेसरी प्राप्ता पलासा कुसुमैर्मुने रक्ताशोककरा तन्वी देवर्षे किंसुकाङ्घ्रिका नीलाशोककचा श्यामा विकासिक मलानना नीलेन्दीवरनेत्रासा बिल्ववृक्षफलस्तनी प्रोत्फुल्लकुन्दरदना मञ्जरीकरणशोभिता बन्धुजीवाधरा शुभ्रा सिन्धुवारनखोद्भवा पुंस्कोकिलसुरा पुण्या कदम्ब वसना शुभा वर्हिवृन्दकलापा च सारस्वनूपुरा वासन्ते वद्यरसना मत्तहंसगतिस्तथा पुत्रजीवांशुकन्यस्तरोमराजविराजिता वसन्तलक्ष्मी सम्प्राप्ता ब्रह्मन् बदरिकाश्रमे अकाले किमियं प्राप्तं विस्मयोऽयं ममाधुना तपो विघ्नकरा नूनं देवर्षे परिचिन्तय श्रूयते सुरनारीणां गानं ध्यानविनाशनम् आवयोस्तप्पि भङ्गाय कृतं भगवता किल ऋतुराडन्यथा काले प्रीतिं सञ्जनयेत् कथं विघ्नोऽयं विहितो भाति भीतेनासुरशत्रुणा वाता सुगन्धा शीताश्च समायान्ति मनोहरा नान्यत् कारणमस्ति सत्कृतुर्कृतिं विना इति ब्रुवति विप्राग्रे देवे नारायणे विभौ सर्वे दृष्टिपथं प्राप्ता मन्मथ प्रमुखास्तदा ददर्श भगवान् सर्वान् नरो नारायणस्तथा विस्मयाविष्टमनसौ बभूवतुरुभावपि मन्मथं मेनकां चैव रम्भां चैव तिलोत्तमां पुष्पगन्धां सुकेशीं च महाश्वेतां मनोरमां प्रमद्वरां घृताचीं च गीतज्ञां चारुहासिनीं चन्द्रप्रभां च सोमां च कोकिलालापमण्डितां बिन्दुन्मालाम्बुजाक्षौ च तथा काञ्चनमालिनीम् एताश्चान्यावरारोहा दृष्टास्ताभ्यां तदान्तिके तासां दृष्टसहस्राणि 50 अधिकानि च वीक्षितौ विस्मितौ जातौ कामसैन्यं सुविस्तरम् प्रणम्याग्रे स्थिता सर्वा देववाराङ्गनास्तदा दिव्याभरणभूषाढ्या दिव्यमालोपशोभिता जगुच्छलेन ता सर्वा पृथिव्यामतिदुर्लभं तत्तथावस्थितं दिव्यं मन्मथादिविवर्धनं शुश्राव भगवान् विष्णुर्नरो नारायणस्तदा श्रुत्वा प्रोवाच तास्तत्र प्रीत्या नारायणो मुनिः आस्यतां सुखमत्रैव करोम्यातिथ्यमद्भुतं भवत्योतिथिधर्मेण प्राप्ता स्वर्गात् सुमध्यमाः। व्यास उवाच साभिमानस्तु सञ्जातस्तदा नारायणो मुनिः इन्द्रेण प्रेषिता नूनं तथा विघ्नचिकीर्षया वराक्या का इमा सर्वा सृज्याम्यद्य न वा किल एताभ्यो दिव्यरूपाश्च दर्शयामि तपोबलं
इति संचिन्त्य मनसा करेणोरुम्प्रताड्य वै तरसोत्पादयामास नार्यं सर्वाङ्गसुन्दरीं नारायणोरुसम्भूता हुर्वसीति तथा शुभा ददृशुस्तास्थितास्तत्र विस्मयं परमं ययुः तासां च परिचर्यार्थं तावतीश्चातिसुन्दरी प्रादुश्चकार तरसा तदा मुनिरसम्भ्रमः गायन्त्यश्च सन्त्यश्च नानोपायनपाडया प्रणेमुस्ता मुनिः सर्वा स्थिता कृत्वाञ्जलिं पुरः तां वीक्ष्य विभ्रमकरीं तपसो विभूतिं देवाङ्गना हि मुमुः मोहयन्त्याः ऊचुश्च्युतौ प्रमुदिता ननपद्मशोभा रोमाद्गमोल्लसितचारुनिजाङ्गवल्यः कुर्युः कथं स्तुतिमहो तपसो महत्त्वं धैर्यं तथैव भवतामभिवीक्ष्य बाला अस्मत्कटाक्षविसद्दिग्धस्सरेण दग्धा को वा न तत्र भवतां मनसो व्यथा न ज्ञातव्युवां नरहरे परमांसभूतौ देवौ मुनिः समदमादिनिधे सदैव सेवानिमित्तमेनो गमनं न कामं कार्यं हरे शतमखश्च विधातुमेव भाग्येन केन युवो किल दर्शनं न सम्पादितं न विदितं खलु सञ्चितं तत् चित्तं क्षमं निर्जने वेतं युवाभ्याम् अस्मद्विधेस् किल कृतागसितापमुक्तं कुर्वन्ति नैव विबुधा तपसो व्ययं वै शापेन तुक्षफलदेन महानुभावा व्यास उवाच इत्थं निशम्य वचनं सुरकामिनीनां तावु चतुर्मुनिवरौ विनयान्नतानां प्रीतौ प्रसन्नवदनौ जितकामलोभौ धर्मात्मनौ द्विजतपो रुचिशोभिताङ्गौ नरनारायणाभूच्युतो ब्रुवन्तु वाञ्छितान् कामान् ददावस्तुष्टमानसौ यान्तु स्वर्गं गृहीत्वेमा मुर्वशीं चारुलोचनाम् उपायनमियं बाला गच्छत्वद्य मनोहरा दत्तावाभ्यां भगवता प्रीणनायोरुषंभवा स्वस्त्यस्तु सर्वदेवेभ्यो यथेष्टं प्रव्रजन्तु च न कस्यापि तपो विघ्नं प्रकर्तव्यमता परम्। दिव्य ऊचुः को गच्छामो महाभाग प्राप्तास्ते पादपङ्कजं नारायणसुरश्रेष्ठ भक्त्या परमया मुदा वाञ्छितं चेद्वरं नाथ ददासि मधुसूदन तुष्टा कमलपत्राक्ष ब्रवीमो मनसेप्सितं पतिस्त्वं भवदेवेश वरमेनं परन्तप भवामा प्रीतियुक्तास्तां सेवितुं जगदीश्वर त्वया चोत्पादिता नार्या सन्त्यन्याश्चारुलोचना उर्वश्याद्यास्तथा यान्तु स्वर्गं वै भवदाज्ञया स्त्रीणां षोडशसहस्रं तिष्ठत्वत्र शतार्धकं सेवां तत्र करिष्यामो युवोस्तापसोत्तमौ वाञ्छितं देहि देवेश सत्यवाग्भौमाग्धव आशाभङ्गो हि नारीणां हिंसनं परिकीर्तितं कामार्तानं च मुनिभिर्धर्मज्ञैस्तत्त्वदर्शिभिः भाग्ययोगादिः प्राप्ता स्वर्गात् प्रेम परिप्लुता त्यक्तुं नारसि देवेश समर्थोऽसि जगत्पते। नारायण उवाच पूर्णं वर्षसहस्रं तु तपस्तप्तं मयात्र वै जितेन्द्रियेण चार्वङ्ग्या कथं भङ्गं करोम्यतः नेच्छा कामे सुखे काचित् सुखधर्म विनाशके पशूनामपि साधर्मे रमेत मतिमान् कथम् अप्सरस ऊचुः शब्दादीनां च पञ्चानां मध्ये स्पर्शसुखं वरम् आनन्दरसमूलं वै नान्यदस्ति सुखं किल अतोऽस्माकं महाराज वचनं कुरु सर्वथा निर्भरं सुखमासाद्य चरस्व गन्धमादने यदि वाञ्छसि नाकं त्वं नाधिको गन्धमादनात् रमस्वात्र शुभे स्थाने प्राप्य सर्वासुराङ्गनाः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे सरसां नारायण समीपे प्रार्थनाकरं नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमः। अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना। व्यास उवाच इत्याकर्णवचस्तासां धर्मपुत्ता प्रतापवान् विमर्शमकरोच्चित्ते किं कर्तव्यं मयाधुना हास्योऽहं मुनिवृन्देषु भविष्याम्यद्य संगमात् अहंकारादिदं प्राप्तं दुःखं नात्र विचारणा मूलं धर्मविनाशस्य प्रथमं यदहं कृते मूलं संसारवृक्षस्य यथा प्रोक्तो महात्मभिः दृष्ट्वा मौनं समाधाय न स्थितोऽहं समागतं वराङ्गनाङ्गणं जुष्टं तेनासं दुःखभाजनम् उत्पादितास्तथा नार्यो मया धर्मव्ययेन वै तास्तु मां बाधितुं वृत्ता कामार्ता प्रमदोत्तमा ऊर्णनाभिरिवाद्याहं जालेन स्वकृतेन वै बद्धोऽस्मि सुदृढेनात्र किं कर्तव्यमता परं
यदि चिंतां समुत्सृज्य सन्त्यजाम्य बला इमा सप्ता भ्रष्टा वृजिष्यन्ते सर्वा भग्नमनोरथा मुक्तोऽहं सञ्चरिष्यामि विजने परमं तपः तस्मात् क्रोधं समुत्पाद्य त्यक्ष्यामि सुन्दरीगणम्। व्यास उवाच इति संचिन्त्य मनसा मुनिर्नारायणस्तदा विमर्शमकरुच्चित्ते सुखोत्पादनसाधने द्वितीयोऽयं महाशत्रु क्रोधा संतापकारकः कामादप्यधिकं लोके लोभादपि च दारुणः क्रोधा विभूता कुरुते हिंसां प्राणविघातिनीं दुःखदां सर्वभूतानां नरकारामदीर्घिकां यथाग्निर्घर्षणाज्जाता पादपं प्रदहेत् तथा देहोत्पन्नस्तथा क्रोधो देहं दहति दारुणः। व्यास उवाच इति संचिन्त्य मानं तं भ्रातरं दीनमानसम् उवाच वचनं तथ्यं नरो धर्मसुतोऽनुजः। नर उवाच नारायण महाभाग कोपं यक्ष महामते शान्तं भावं समाश्रित्य नाशयाहंकृतिं परां पुराहंकारदोषेण तपो नष्टं किलावयो संग्रामश्चाभवत्ताभ्यां भावाभ्याम् असुरेणः दिव्यवर्षसहस्रं तो प्रह्लादेन महाद्भुतं दुःखं बहुतरं प्राप्तं तत्रावाभ्यां सुरोत्तम तस्मात् क्रोधं परित्यज्य शान्तो भव मुनीश्वर शान्तस्त्वं तपसो मूलं मुनिभिः परिकीर्तितं। व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा शान्तो भूद्धर्मनन्दनः। जन्मेजय उवाच संशयोऽयं मुनिश्रेष्ठ प्रह्लादेन महात्मना विष्णुभक्तेन शान्तेन कथं युद्धं कृतं पुरा कृतवन्तौ कथं युद्धं नरनारायणाभ्यसि तापसौ धर्मपुत्रौ द्वौ सुशान्तमानसावुभौ समागमा कथं जातस्तयोर्दैत्यसुतस्य च संग्रामस्तु कथं ताभ्यां कृतस्तेन महात्मना प्रह्लादोऽप्यति धर्मात्मा ज्ञानवान् विष्णुतत्परा नरनारायणौ तद्वत्तापसौ सत्त्वसंस्थितौ तेन ताभ्यां समुद्भूतं वैरं यदि परस्परं तदा तपसि धर्मे च श्रम एव हि केवलं क्व जपा क्व तपश्चर्या पुरा सत्ययुगेऽपि च तादृशैर्न जितं चित्तं क्रोधाहङ्कारसंवृतं न क्रोधो न च मात्सर्यमहङ्काराङ्कुरं विना अहङ्कारात् समुत्पन्ना कामक्रोधादया किल वर्षकोटिसहस्रं तु तपा कृत्वातिदारुणम् अहङ्काराङ्कुरे जाते व्यर्थं भवति सर्वथा यथा सूर्योदये जाते तमो रूपं न तिष्ठति अहङ्काराङ्कुरस्याग्रे तथा पुण्यं न तिष्ठति। प्रह्लादोऽपि महाभागा हरिणा संयुध्यत तदा व्यर्थं कृतं सर्वं सुकृतं किल भूतले नरनारायणौ शान्तौ विहाय परमं तपः कृतवन्तौ यदा युद्धं क्व समः सुकृतं पुनः ईदृग्भ्यां सत्त्वयुक्ताभ्याम् अजेया यदहङ्कृतिः मादृशानाञ्च का वार्ता मुनेऽहङ्कार संक्षये अहङ्कार परित्यक्तो न कोऽप्यस्ति जगत्त्रये न भूतो भविता नैव यस्त्यक्तस्तेन सर्वथा मुच्यते लोह निगडैर्बद्धा काष्ठमयैस्तथा अहङ्कार निबद्धस्तो न कदाचित् विमुच्यते अहङ्कारावृतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्। भ्रमत्येवि संसारे विष्ठामूत्र प्रदूषिते ब्रह्मज्ञानं कुतस्तावत् संसारे मोहसंवृते मतं मीमांसकानां वै सम्मतं भाति सुब्रत महान्तोऽपि सदा युक्ता कामक्रोधादिभिर्मुने मादृशानां कलावस्मिन् का कथा मुनिसत्तम। व्यास उवाच कार्यं वा कारणात् भिन्नं कथं भवति भारत कंटकं कुण्डलञ्चैव सुवर्णसदृशं भवेत् अहङ्कारोद्भवं सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरं पटस्तन्तुवसा प्रोक्तस्तद्वियुक्ता कथं भवेत् मायागुणस्त्रिभिः सर्वं रचितं स्थिरजङ्गमं सत्रणस्तम्भपर्यन्तं का तत्र परिदेवना ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रस्ते चाहङ्कारमोहिता भ्रमन्त्यस्मिन् महागाधे संसारे नृपसत्तम वसिष्ठनारदाद्याश्च मुनयो ज्ञानिनः परं ते विभूताः संसरन्ति संसारेऽस्मिन् पुनः पुनः न कोऽप्यस्ति नृपश्रेष्ठ त्रिलोकेषु देहभृत् एभिर्माया गुणैर्मुक्ता शान्त आत्मसुखे स्थिता कामक्रोधौ तथा लोभौ मोहोऽहङ्कार संभवा न मुञ्चन्ति नरं सर्वं देहवन्तं नृपोत्तम अधीत्यवेदशास्त्राणि पुराणानि विचिन्त्य च कृत्वा तीर्थाटनं दानं ध्यानं चैव सुरार्चनं करोति विषयासक्ता सर्वं कर्म चौरवत् विचारयति नो पूर्वं काममोहमदान्विता कृते युगेऽपि त्रेतायां द्वापरे कुरुनन्दन विद्धोत्रास्ति च धर्मोऽपि काकथाद्य कलौ पुनः।
स्पर्धा सदैव सद्रोहा लोभा मर्सौ च सर्वदा एवं विधोस्ति संसारो नात्र कार्याभिचारणा साधवो विरलालोके भवन्ति गतमत्सरा जितक्रोधा जितामर्षा दृष्टान्तार्थं व्यवस्थिता राजोवाच ते धन्याकृत पुण्यास्ते मदमोह विवर्जिता जितेन्द्रिया सदाचारा जितं तैर्भुवनत्रयं दुनोमि पातकं स्मृत्वा पितुर्मम महात्मनः कृतस्तपस्विना कंठे मृतसर्पोज्झगम्बिना अतस्तस्य मुनिश्रेष्ठः भविता किं ममाग्रता न जाने बुद्धिसम्मोहात् किं वा कार्यं भविष्यति मधुपश्यति मूढात्मा प्रपातं नैव पश्यति करोति निन्दितं कर्म नरकान्न बिभेति च कथं युद्धं पुरावृत्तं विस्तरात् तद्वदस्व मे प्रह्लादेन यथा चोग्रं नरनारायणस्य वै प्रह्लादस्तु कथं याता पातालात् तद्वदस्व मे सारस्वते महातीर्थे पुण्ये बदरिकाश्रमे नरनारायणौ शान्तौ तापसौ मुनिषत्तमौ कृतवन्तौ तथा युद्धं हेतुना केन मानद वैरं भवति वित्तार्थं दारार्थं वा परस्परम् एषणारहितौ कस्मात् चक्रतौ प्रधनं महत् प्रह्लादोऽपि च धर्मात्मा ज्ञात्वा देवौ सनातनौ कृतवान् स कथं युद्धं नरनारायणौ मुनि एतद्विस्तरतो ब्रह्म श्रोतुमिच्छामि कारणम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे अहंकारावर्तन वर्णनम नाम सप्तमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।